마찬가지.
My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you, could catch you near, and post you chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home is just you and me. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas, oh you meant the world to me. When I'm blue, I think of you in your eyes. How they look at mine, so kind. But like that, you slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was in a lifeboat wandering far until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the हेलो नमस्कार दोस्तों, हम बनाए हैं ये जो देख रहे हैं आप, ये बैटरी जो इस लाइट को अच्छी तरह से ग्लो करता है। और इसके लिए हम यूज़ किए हैं चारकोल और सोडा और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो आप लोग देख रहे हो ये पीवीसी पाइप है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हमने कॉपर पे रखा है और ये जिंक है, जिंक माइनस पे रखा है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर पे माइनस निकल रहा है। तो चलिए दिखाते हैं ये काम करता है कि नहीं। देखिए बाहर से कुछ सप्लाई नहीं है और यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ जो कि ग्लू से चिपक गया है, फेविक्विक सुपर ग्लू से। तो इस लाइट को ग्लो करा के दिखाता हूँ। एक हाथ से दिक्कत हो रहा है, वही दिखाता हूँ। देखिए मेरे हाथ में कुछ सप्लाई नहीं है, ये अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा देखिए, बाहर से कोई सप्लाई नहीं है इसमें, जो कि अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। इसका एक कनेक्शन हटा दूंगा तो बंद हो गया। देखिए यहाँ पे सिर्फ चारकोल ही चारकोल है, इस तरह से। देखो ये कॉपर है और इस साइड जिंक है, मैंने इसको जोड़ दिया है। देखिए
ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इसमें छः सेल यूज़ किया हूँ, जो कि PVC पाइप का बनाया हुआ हूँ। और इसमें चारकोल है और सल्फ्यूरिक एसिड है और थोड़ा सा सोडा है, मिक्स करके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताना, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस तरह और एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।